आज हम बनाने वाले हैं क्ले से कपड़े सिलाई करने वाली चीज़ें, जो कि हमारी दादी, हमारी नानी और हमारी अम्मियाँ सीती हैं कपड़े। इस फ्रॉक को देख के मेरे दिल में एक बात आई। मैं भी जब छोटी होती थी तो मेरी नानी अम्मा मेरे लिए फ्रॉक्स लेके आती थी और मैं अपनी मर्ज़ी का कोई एक पसंद के पहन लेती थी। वो भी क्या दिन होते थे, बचपन की यादें और नानी का प्यार। वाह वाह ये कितना प्यारा है ना। वाह नाइस। वैसे तो बहुत सारी बातें हो गई हैं नानी और दादी की टॉपिक पे, तो सब मुझे बताओ कमेंट करके किसको नानी अच्छी लगती है, किसको दादी अच्छी लगती है। Wow, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. 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 Wow.
और ऐसे ही बना कर देती होती थी हमारी नानी, हमारी दादी फ्रॉक्स। कितने प्यारे लगे। अब लग रही है ना दादी की खूबसूरत टोकरी। इसी में ही दादियाँ डालती होती थी अपनी सुइयाँ, अपने कपड़े, अपनी चीज़ें।
आज हम बनाने वाले हैं क्ले से कपड़े सिलाई करने वाली चीज़ें, जो कि हमारी दादी, हमारी नानी और हमारी अम्मियाँ सीती हैं कपड़े। इस फ्रॉक को देख के मेरे दिल में एक बात आई। मैं भी जब छोटी होती थी तो मेरी नानी अम्मा मेरे लिए फ्रॉक्स लेके आती थी और मैं अपनी मर्ज़ी का कोई एक पसंद के पहन लेती थी। वो भी क्या दिन होते थे, बचपन की यादें और नानी का प्यार। वाह वाह ये कितना प्यारा है ना। वाह नाइस। वैसे तो बहुत सारी बातें हो गई हैं नानी और दादी की टॉपिक पे, तो सब मुझे बताओ कमेंट करके किसको नानी अच्छी लगती है, किसको दादी अच्छी लगती है। Wow, so beautiful, so elegant, just looking like a wow.